Hi everyone, this week I have come up with the chapter Electrolysis of Standard 10 syllabus. Now electrolysis, what does this word mean? Electro means electricity and lysis means breaking. Okay, so if there is a chemical change, if there is a breaking in the compounds, okay, breaking in the bonds of a chemical compound in the passage of electric current, when we pass electric current pass करेंगे तो chemical जो compounds है उनके bonds में break होगा. Okay, breaking of bonds will take place. There will be lysis, there will be cleavage. So on passing of electric current, the bond gets cleaved and we have what? We have ions in the solution. So electrolysis is defined as a process of decomposing the ionic compounds into their elements by passing a direct electric current to the compound in a fluid form, and the positive charged ions, जो positive charged ions release होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में उसको cations बोलते हैं, और जो negatively charged anions release होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Anions. अगर हम NaCl लेंगे, if we take NaCl as an anionic compound and Na plus is the cation, Cl minus is the anion. Now we need to remember that cations move towards cathode because cations are the positively charged ions and cathode is the negative electrode. Anions move towards the anode. Anions are negatively charged, they will move towards the positively charged electrode. Now cations, they are reduced at cathode and they are oxidized at anode. Always remember that reduction reaction will take place at cathode reduction, and oxidation will take place at anode oxidation. Okay, so in this way you can remember and just see that if this is the negative terminal of the battery and this is the positive terminal of the battery. Okay, battery अगर इस तरीके से है, if this is the negative and this is the positive terminal of the battery. So this is the negative one, this is the positive. So negative के साथ जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड उसको बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयंस कैटायंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है और जो एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा. ठीक है, इसलिए इसके पास नेगेटिवली चार्ज आयंस आ रहे हैं तो वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे. सो अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहा है. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स व्हिचएवर इलेक्ट्रॉन्स इज कमिंग हियर. ओके, द कैटायंस व्हिच हैव मूव्ड हियर. Suppose this is the metal cation which is moving here. So this metal cation will accept this electron and it will get reduced to metal in the cathode. And whatever anions are going here, they will lose electrons and they will pass on, okay, as elemental form. They will lose electrons. There will be loss of electrons. So electron का भी देखो circuit कंप्लीट हो जा रहा है. जो इलेक्ट्रॉन मेटल गेन कर रहा है वही एनायंस फिर से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द मेटल इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सर्किट बना और रिवर्स में क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है. सर्किट भी जो है वो क्या है? एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा मैकेनिज्म होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू कॉपर सल्फेट एग्जांपल. Here we have taken aqueous copper sulfate. So we will have ions, copper ions in the solution, sulfate ions in the solution. We have taken acidified, so it will be having H plus, SO4 2 minus, and it is an aqueous copper sulfate solution, so we will be having H plus and OH minus ions 2 in the solution. So total ions present in the solution will be these many. So how many cations are there? Cu plus 2 and H plus. Now in the electrochemical series, copper plus 2 ion has a higher standard reduction potential. It has a higher ease of reduction. So which cation will be discharged at cathode? Copper plus 2 cation and H plus cation. Both will be moving towards cathode. Okay. But copper plus 2 ion will be discharged at cathode because it has a higher standard reduction potential, higher ease of reduction. So at cathode, which reaction will take place? Reduction reaction will take place. Copper plus 2 ion will go towards cathode, it will gain 2 electrons and will get deposited as copper metal. So here this is the negative electrode cathode, negative terminal of the battery.
Okay, and this one is the positive terminal of the battery connected to the positive anode. So copper plus 2 ions will go towards the positive, now to the negative cathode. Okay, opposite attracts. Now at anode, oxidation reaction take place. Both the anions, OH minus ions will go and sulfate anions will also go. Both the anions will go towards anode, but which will be discharged? Which ion will be discharged here? Whether it will be OH minus or whether it will be sulfate ion, it depends on the electrochemical series. The electrochemical series for the anions. So in the electrochemical series we have sulfate, nitrate, chlorine, bromine, iodine, and then the hydroxyl ion. So as we are going down, the ease of oxidation increases. So OH minus ions has the higher ease of oxidation. So OH minus ion will be discharged. So OH minus ion will lose one electron to form a neutral OH. And that means the multiple OH minus ions जाएंगे उसके पास. अगर multiple electron 4 OH minus ions गए तो 4 electrons lose करके 4 OH neutral molecules बनाएंगे और ये neutral molecules फिर rearrange करके 2H2O plus O2. So this will go as oxygen gas in the anode. तो यहाँ से anode से फिर क्या निकलेंगे? ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे कॉपर, रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट होना कैथोड में शुरू हो जाएगा. जब कॉपर, सारे इंटायर कॉपर आयंस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो अब कौन सा कैटायन बचेगा सोल्यूशन में? H+. उसके बाद H+ आयन डिस्चार्ज होने लगेगा कैथोड में, और फिर कैथोड में क्या होगा? H+ आयन गेन करेंगे हाइड्रोजन, अगेन H+ आयन के इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. फिर यहाँ से फिर क्या निकलना शुरू होगा? हाइड्रोजन गैस. और जब सारे के सारे कॉपर आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये ब्लू कलर जो होगा वो फेड, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स. बिकॉज ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? कॉपर सल्फेट की वजह से. अब जब कॉपर आयंस डिपॉजिट तो ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या होगा? फेड हो जाएगा. ओके, सो इसलिए ये रीजन होता है कि क्यों ब्लू कलर फेड होता है. व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स फेड अप. नाउ electrolysis of copper sulfate with using the copper electrodes. Now copper electrodes are what? Copper electrodes are active electrodes. These are active electrodes. They do take part in the reaction. So in the copper sulfate we are having copper sulfate ions. Again यहाँ पे क्या क्या ions होंगे? Copper ही होंगे, copper +2, sulfate ion, H+, OH minus water से, H+ और SO4 minus acid से. Again cations क्या क्या है इसमें? H+ and copper, both the cations will go, but the copper will be discharged because copper has a higher ease of reduction. And anode में क्या होगा? Anode में दोनों anions आएंगे, सल्फेट एनायन भी जाएगा एनोड की तरफ, ओके, और OH माइनस आयन भी जाएगा एनोड की तरफ, बट none of them will be discharged. None of them will be discharged. Why? None of them will be discharged. Why will they not be discharged? Because the anode used is a copper anode. It's an active electrode, so it will dissociate. It will dissociate to give copper ions. It will lose 2 electrons to give copper ions. Loss of electron, it will lose electron. क्योंकि एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एंड कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन. So again the electrons from the cathode, copper gains these electrons and it gets deposited as copper form on the cathode. And here the copper +2 copper metal, it continuously lose electrons and complete the circuit. Electrons move up and copper itself passes on as copper +2 ions in the solution. So here in this electrolysis the blue color of the solution will not fade. In the previous one blue color was fading. Here the blue color of the solution will not fade. Okay, it will remain blue in color only. So this is the difference between the electrolysis of copper sulfate solution using the platinum electrodes, which are
inert electrodes. Platinum electrodes are the inert electrodes. They don't react, they don't undergo reaction. These are inert or inactive electrodes. Platinum or graphite. Okay, they don't react at all. So ये difference होता है between these two types of electrolysis using two different electrodes. Okay, electrolysis का mechanism दोनों केस में same है, but reaction differ कर जा रहा है. क्यों? electrodes के change में. Previous case में electrodes are inactive और इस case में electrodes active है. In my next video, I'll be explaining about the applications of electrolysis. If you like the content of the video, if you have understood the mechanism of electrolysis, then please do a thumb like and subscribe my channel.